EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda.
Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. EdYoda, the end of your job search and the beginning of your dream career. EdYoda's live sessions are taught by industry experts, giving you hands-on experience and practical knowledge with real projects, not just degrees. EdYoda's industry-recognized certifications will help you stand out in the job market. And that's not all. With EdYoda's exclusive job board featuring 500+ companies, finding your dream job has never been easier. Say goodbye to endless job searching and hello to your dream career with EdYoda. Join EdYoda student community today and start building your dream career. Hello everyone, good evening. I hope you all are doing great and learning new things daily and practicing your English on a regular basis. तो अभी तक आपके इंग्लिश में पहले से काफी इम्प्रूवमेंट आया होगा, आप काफी नई चीजें सीख रहे होंगे, आई होप सो. Alright, so with that spirit of learning new things every day, let us begin with our topic, that is mastering everyday phone conversations in English. तो आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश में अगर हमें फोन कॉन्वर्सेशन करनी हो, यानी कि जब हम फोन पर बातचीत करते हैं तब हमें किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, एंड हाउ कैन वी हैव अ ग्रेट फोन कॉन्वर्सेशन इन English. So why do we need to learn this? First, let us understand that. So the thing is, nowadays, English has become kind of a business language around the world. Whether you are a student or whether you are a working professional, you need to have conversation with different types of people to build up your network, right? So sometimes the thing is,
नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ योर मदर टंग. ओके, जरूरी नहीं है आपको जो भाषा आती है वही भाषा दूसरे भी बात करते हो उसी में. Then what can we do is we can communicate in English. Okay, that is the best way to communicate. तो इंग्लिश हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है कि हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं. So at that time we need to communicate with the different types of people on phone, and we have to use English. Sometimes what happens is, as a person who is not very much familiar with English language, what happens is sometimes you lose your confidence when talking to people on phone. And if the person on the other side starts to speak in English, or just starts the conversation very fluently in English, and you feel like, oh my God, now what am I going to do? Okay, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या समझ तो सब कुछ आ रहा है पर बोला नहीं जा रहा है ना. ऐसा नहीं है हमें समझ नहीं आता. We are able to understand the language, but what happens is we are not able to communicate from our end. हमें जब बात करनी हो ना, तब हम लोग थोड़े से क्या होते हैं, कच्चे पड़ जाते हैं उसमें. We are not able to communicate well. So in order to avoid that and to boost your confidence, ताकि आप जब फोन पर इंग्लिश में बात करें, सो यू फील लाइक कि हाँ मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अब कोई डरने की बात नहीं है. आई नो दैट एट सम पॉइंट्स व्हाट should I say, what kind of sentence should I use. So today's class is all about that. Mastering everyday phone conversations in English. It is useful for both students as well as working professionals. And if you are in a job where you have to communicate with people on a regular basis via email or phone, then this session is really helpful. All right. So let's dive right into it. So pehle, whenever we talk on the phone, the first thing that we say is a greeting. Okay, so we should start with a greeting. Greetings होती है hello, hi, good morning, good afternoon. Okay, ये सारी चीजें greet करने के लिए हम यूज करते हैं. So हमें पता है हम ऐसे कहते हैं hello, कौन बात कर रहा है ना. We directly start with hello. You can say हेलो, जिसने बात की जिसने आपको कॉल किया है, यू कैन टेल द कॉलर्स नेम, और यू कैन जस्ट स्टार्ट विद हेलो और हाउ आर यू, व्हाई हैव यू कॉल्ड, है ना. और यू कैन गो फॉर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे and the person you are speaking to. If that person is your colleague or someone in your professional network, then you can start with that kind of greeting. Or you can just say hi, right? Hi हम usually बहुत ही casual greeting के लिए use करते हैं. For example, we are talking with our friends and family. At that time, we can say hi simply. Okay, hi, hey, how are you? Directly, we can start our conversation. So the best way to start with a phone conversation is a greeting. Okay, directly बात करना शुरू करने से पहले you can start with a greeting. Okay, it can be hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, anything. After that, you have to identify the caller and the receiver. Okay, so it is many people we already know, we have their contact information in our phone book, that is in our mobile phone book. So we are able to understand who is calling us, right? But sometimes we have people who are unknown caller. That is when the problem occurs. ठीक है, अगर हमें पता है कि हमें कौन कॉल कर रहा है, हम किससे बात कर रहे हैं, so we can have our tone according to that person, and we don't have to be so formal. Okay, we don't have to ask for the person's information that आप कौन बात कर रहे हो, नहीं, क्योंकि हमें already पता है. But when we are talking on an unknown number, okay, somehow किसी ने आपको न्यू इंसान है जो आपके नेटवर्क में शामिल होना चाहता है, and that person is calling you, so you pick up and you need to first identify
that who is the caller. Okay, sometimes when the receiver is calling somebody unknown, then मतलब कि अगर आप कॉलर की साइड पे है, then you need to identify the receiver, है ना. आपको कंफर्म करना पड़ता है कि मैं जिससे बात करना चाहता हूँ, क्या आप वही इंसान हो, राइट. So am I talking to the correct person or not? So this is one of the major points where people get stuck. Okay, this is a point where people don't feel comfortable that what should I use in order to ask for somebody's name. Of at many times it comes out to be very blunt. बहुत ही रफ तरीके से, बहुत ही रूड साउंड करते हुए भी आ जाता है. हम ऐसे कह देते हैं, हेलो, इसे फोन देना, डायरेक्टली नाम बोलकर, ठीक है. या फिर अच्छा कौन बात कर रहा है, ऐसे डायरेक्टली हम बोलते हैं. इट साउंड्स वेरी रूड, राइट. So in English also people just say, who is this? Right. Now, who is this? It is conveying the same meaning कि कौन बात कर रहा है. But what happens it sounds very rude. So when you need to identify the caller or the receiver, then you can go for any of these sentences. So let's look at them. First, let us focus on the person who is calling. जो call कर रहा है, that is the caller. Okay, so the caller is trying to identify the receiver or is giving information about himself or herself. Okay, so for the first sentence we have, may I speak or talk to Mr. Nayan Sharma? May I speak with or talk to Mr. Nayan Sharma? Okay. So what the person is doing, the person who is calling, the caller, is asking to speak with Nayan Sharma. Now, what happens that Nayan Sharma might be a new person to him or her, the caller. So we dial the number and we are, okay, it is Nayan Sharma's number. But it is not required that only Nayan is going to pick up the phone. Somebody else might pick up his phone, right? So that's why we need to identify the receiver. क्यों पता लगाना पड़ता है? कई बार हमारा ही फोन हमने रखा होता है, तो जरूरी नहीं है हमारा फोन बज रहा है और अननोन नंबर है तो हम कई बार कहते हैं आप उठा लो, बताओ कौन है. अगर हम कहीं किसी काम में है, if we are busy with something else and we are certain that somebody was going to call us and we need to pick up an unknown number as well on priority, then if we are busy, we ask somebody else to pick it up for us, okay, and answer the phone. So that's why it is required for the caller to identify the receiver, right? हमेशा हमें रिसीवर को आइडेंटिफाई क्यों करना पड़ता है? एक तो हम सही इंसान से बात कर रहे हैं या नहीं, whether we are talking to the right person or not. Also, if we want to give some confidential information, then it should be conveyed to the right person, okay, to the point of contact, particular point of contact. So we need to identify our receiver, okay. So we can say, may I speak with or talk to Mr. Nayan Sharma? Then I am calling for Miss Suhani Avasthi. I am calling for Miss Suhani Avasthi. This is another way of saying that I want to speak with Miss Suhani Avasthi. Okay? If she herself is receiving the call, then she will say this is she. Okay? Or if not, then the person answering the call will have to pass on to the receiver we are asking for. Okay? This is Jay calling from ZTech. Now here the caller is identifying himself or herself that himself that he's calling from ZTech, a company, okay, so that the receiver can understand, okay, who is the caller, and then they can ask for the receiver's information. Okay, so this is how you can identify a caller. If you are a student and your teacher provides you with somebody's contact information, that you can ask for my reference and go for an internship. Okay, for example, let us take internship.
your teacher provided you with the contact information and said, contact so and so person, give my reference, and you can talk for your internship. Then what you will do? You will call that person. Hello, good afternoon, good evening. Uh, I am calling for, or may I speak with so and so person? Okay, then you can tell your name, that my name is this and this. My professor or my teacher gave me a number regarding an internship. So this is why I am calling you. Okay, so it sounds very professional, formal, and very much polite. Okay, बहुत ही polite sound करने के लिए, formal और professional sound करने के लिए आपको ये चीजें follow करनी चाहिए. And these are just simple sentences that can help you to communicate in English on phone without any hesitation. ओके अगर आपको नर्वसनेस फील हो रही है, आप हेजिटेट करते हो कि अरे किसी से अभी इंग्लिश में बात करनी है तो क्या बोलूंगा मैं, अगर वो कुछ इधर उधर पूछ लेंगे तो. ओके सो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, राइट. So first we learned how to the person who is calling, अगर वो बात कर रहे हैं, so that person is trying to identify the receiver. Now the person who is receiving, यानी कि अगर आपको कॉल लगाया जा रहा है and you are receiving the call, I am receiving the call, right? तो मुझे जानना होगा कि मुझे कॉल कर कौन रहा है. So as a receiver, I am trying to identify my caller. So at that time, you can use any of these sentences. Let's look at them one by one. First is, who am I speaking with? Who am I speaking with? यानी मैं किसके साथ बात कर रही हूँ. May I know or ask who is calling? May I know who is calling? May I ask who is calling? Right? तो क्या मैं जान सकती हूँ या क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन बात कर रहा है? Could you please tell or state your name? Could you please tell or state your name? क्या आप आपका नाम बता सकते हैं? Now, could is the modal verb which we have used here to ask a question in a polite manner. When we studied about modal verbs, we learned that could and would are used to make polite requests or ask polite questions. Okay, politely हमें बात करनी हो, then we use would or could. Okay. Then we come to the art of listening. अब हमने greet कर दिया. We have identified the caller and the receiver कि कौन बातचीत कर रहा है. Now we need to understand the art of listening, right? So right now I am taking your session. So you all are listening, right? So listening is not just about sitting and letting the sounds fall on your ear, okay? कि ईयर ड्रम पे साउंड्स जा रहे हैं and हम सुन रहे हैं, नहीं. Listening is focusing, understanding and absorbing the information what the person in front of you is conveying. Okay, वो जो कह रहे हैं वो आप तक समझ रहे हो आप. सुनना और समझना, ठीक है, उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आपको एब्जॉर्ब करनी है वो समझना. दैट इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग. When we talk about communication, not just in English but in any language, then a majority part of communication, at least 60 to 70%, is dependent on active listening. यानी कि कितना अच्छे से आप सुनते हैं. Okay, communication is not just about speaking. That is a minor part, but the major is listening, सुनना. तो यहाँ पर अगर हम phone conversations की बात करें, so when you are talking on a phone, then you should be an active listener. Not just on phone, but it is good to be an active listener in your daily life. Whether you are a student or a working professional, you need to understand information, you need to process it, you need to absorb the important facts, and that can only be done if you are an active listener. Okay? So active listening is crucial in phone conversation. Crucial means it is very important during phone conversations. It show understanding through verbal cues. Verbal cues, cues यानी कि इशारे. तो
जब भी आप कॉल पर बात कर रहे हैं एंड योर कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू अ लेंथ, ओके, काफी लंबी चल रही है आपकी बातचीत, so at that time you might be discussing something important, you might be discussing a situation, right, or a plan of action whatsoever, then you need to show some verbal cues, because at that time the person is not able to see you, so you cannot use the non-verbal cues such as your facial expressions, your gesture, or your posture. But what you can यूज इज योर वर्बल क्यूज, यानी कि बोलने वाले जो इशारे होते हैं उससे आप बता सकते हैं दैट यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन वेरी केयरफुली। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर कुछ बोलते तो हम नॉड करते हैं ना, मुंडी हिलाते हैं, नॉड करते हैं कि हाँ ना समझ में आया या नहीं। सो सिमिलरली जब आप कॉल पर बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू कैन से आई सी in between, means if somebody is saying something and you are able to understand that, you can say I see, okay, all right, okay, sure, or fine, राइट। तो ये जो शब्द है, दीज ऑल एक्ट एज वर्बल क्यूज, इट मेक्स द पर्सन और द कॉलर understand that you are listening to him or her actively, okay, you are not what we say, you have just not put your phone on speaker, or you are listening but you are actually not understanding them, right? Listening is understanding, okay, so you are actively listening to them, you are able to understand them, whatever information they are providing you, okay, you have a focus on the conversation. So to indicate all those things you can use verbal cues, okay, बात करने के इशारे। So when you are using these verbal cues, they should not be blunt, यानी कि एकदम ऐसे ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बस बोल दिया, अच्छा आई सी, ऑल राइट, ओके, नो, रोबोट की तरह नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, जिससे हम नॉड करते हैं, व्हेन वी आर नॉडिंग लाइक ओके आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, ऐसे करते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आता तो नो, लाइक दिस, ओके। So the tone of voice is very important when you are indicating any of the verbal cues. तो जैसे हम कह रहे हैं I see, so it should be I see, okay, like the person is in front of you। ऐसे आप जब बात कर रहे हो, आप एक्टिव लिसनर हो, तो आपको ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे मेरी टोन ऑफ वॉइस को देखना है, वो नेचुरल फ्लो के साथ आती है। जैसे कि हम हमारी भाषा में बात करते हैं रेगुलरली, आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें आप जैसे बात करते हैं वैसे ही आप इंग्लिश में भी वर्बल क्यूज को यूज करेंगे। यू कैन से आई सी, ऑल राइट, ओके, श्योर, फाइन, understood? So the tone of voice is very soothing, or you can say very polite, okay? It is very calm. तो ऐसी tone of voice में आपको verbal cues use करने हैं। Avoid interrupting the speaker and allow them to express their thoughts fully. Avoid interrupting the speaker and allow them to express their thoughts fully. यानी कि जब कोई बात कर रहा है तब आप उसे बीच में टोके नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट? यू शुड नॉट इंटरप्ट द स्पीकर when you are speaking. It is mutual, okay, whether you are speaking or the caller is speaking, then you should respect each other and not interrupt, okay? तो आपको एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, पूरी बात सुनिए, समझिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए, ओके? इट इज ऑलवेज गुड to have the art of listening, not just in telephonic conversation, but even when you are appearing for an interview, okay? When you are attending a meeting, a conference, okay? Whether you are meeting a person for the first time, at any of the event, right? So you should have the art of listening. एंड बिलीव मी, जितना सुनने में आसान लगता है इतनी आसानी से सबकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं। लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा पेशेंट भी रहना पड़ता है, थोड़ा काम भी रहना पड़ता है।
right? So we should avoid interrupting people. We should use verbal cues. Then we come to clarification and confirmation. Okay, तो अगर हमें कुछ सी बात का क्लैरिफिकेशन यानी कि डिटेल चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि अच्छा ये कैसे है, आपको कुछ कंफ्यूजन एंड यू वांट टू क्लियर दैट कंफ्यूजन, और यू नीड कंफर्मेशन, आपको श्योरिटी चाहिए किसी बात की, तो आप मतलब आपने जो बात सुनी है क्या वो सही है, गलत है, या आपको कुछ इंफॉर्मेशन गलत मिली गई है, तो उस रिगार्डिंग जब आपको क्लैरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन लेना हो तब आप क्या कर सकते हैं. So when do you ask for clarification and confirmation? If you are unsure about something, then you can ask relevant questions to gain a better understanding. Okay. So what we are trying to say is that अगर आप किसी चीज को लेके unsure, you don't know, right? So what you can do is you can ask a question related to that to get clarity and to confirm whatever the conversation you had, or if it involved any facts or figures, अगर कुछ नंबर वगैरह था, कुछ important information थी, so it is always good to double check. ओके एक और बार चेक कर लीजिए पूछ कर कि सही था ना, यही कहा था ना. जैसे मम्मी हमें सामान लाने भेजती है तो मम्मी हमें बोलती है कि यू नीड टू गेट ब्रेड, मिल्क, शुगर एंड टी. ओके, तो मम्मी ने लिस्ट बोल दी और हो सकता है हम किसी काम में हो, तो हम क्या करते हैं कि जब हम सामान खरीद लेते हैं तो हम फोन करके एक बार पूछ लेते हैं कि आपने ये ही चीजें लाने बोली थी, दूध, शक्कर, चाय पत्ती और कुछ था, तो बोलेंगे हाँ ब्रेड भी बोला था, तो अच्छा हाँ ब्रेड बोला था, ठीक है. सो इट इज गुड टू गेट अ कंफर्मेशन ऑफ थिंग्स, राइट. तो वैसे ही जब आप किसी से आप कुछ बात कर रहे हैं एंड इट इज इम्पोर्टेंट, ओके, then it is good to have confirmation and clarification. और this is something कि अगर आपको किसी को कुछ रिपीट करने के लिए भी कहना है then you can use these sentences. So how you can say, let us start from the first part, okay, that is from I am sorry. Okay, I am sorry, could you please clarify. Okay, I am sorry, could you please clarify. क्या आप इसे और अच्छे से समझा सकते हैं किसी भी एक पॉइंट को, स्पेसिफिक पॉइंट, आपको जो चीज नहीं समझ में आई. फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनलाइन MBA program in a university. Okay, and I'm not able to understand something. So what I will do is I will call them and have a conversation. If they are explaining something to me regarding the joining process, then I can just say, I'm sorry, could you please clarify the joining process again? तो मुझे समझ में नहीं आया है. That's why I'm asking him or her to give a clarification or give to provide me with in-depth understanding of the joining process. Okay, तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती, it is very easy, बस पूछ लीजिए, I'm sorry, could you please clarify. इतना बोल सकते हैं, या आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताना है तो उसके बारे में बोल सकते हैं. Then I want to make sure I understand correctly. Are you saying, and you can repeat what you understood. All right. So again, let us take the same example of the online MBA admission program. So they informed me about the fee structure. And I just want to confirm that, okay, this is what I heard and this is what I understood. So let me just confirm with the person explaining to me that is it correct or not. So I will say, I want to make sure I understand correctly. Are you saying the fees for 1 year is rupees 50,000 to be paid in 2 installments? यानी कि मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपने मुझे यही समझाया है कि एक साल की फीस 50,000 है जिसे मुझे 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, यानी कि 2 भाग में देना है. अगर नहीं तो दैट पर्सन विल से नो एंड क्लैरिफाई इट. Otherwise, if it is the correct information, the person will say yes. Okay.
Then just to confirm, did you mean repeat the information? यानी कि वही कि confirm करने के लिए क्या यही बात आप कह रहे थे? Could you please provide more details about जो भी स्पेसिफिक आपका पॉइंट है? जैसे कि मुझे जानना है कि आप ऑनलाइन एमबीए में कौन सी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके कौन सी फील्ड्स में देते हैं. देन आई कैन से could you please provide more details about the specializations available at your university for an online MBA program? Okay, I'm not quite clear on so and so. Could you please elaborate? Elaborate करना यानी कि डिटेल आंसर देना. जब हम स्कूल में थे या जितने भी लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, देन हमें कहा जाता था कि शॉर्ट आंसर 1 मार्क, डिटेल आंसर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का डिटेल आंसर होता था. तो जब आपको कुछ चीज डिटेल में जाननी है, ओके, सो यू कैन से कैन यू प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स, और यू कैन से कैन यू कुड यू प्लीज इलैबोरेट. इलैबोरेट का मतलब ही होता है डिटेल्ड, ओके, इन डेप्थ. सो I'm not quite clear on the difference between a front end and a back end developer. Could you please elaborate? मुझे नहीं पता कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर में डिफरेंस क्या होता है, तो आप उस पे इलाबोरेट कर सकते हैं. कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन? I just want to double check, did you say this and this again for checking the information? Sorry. Then we come to our next part. I apologize, but I didn't catch that. I didn't catch the word or the phrase. Could you kindly repeat that? Okay, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, many a times it happens that you are not able to understand the complete information which the caller is providing you. At that time, you can just ask to repeat them. But instead of bluntly saying, please repeat or repeat yourself, you can say it in a more polite and professional way, or in a very, what we say, in a good way by using an appropriate sentence formation. So you can say like this, I apologize, but I didn't catch the word. Okay, जो भी आपको वर्ड नहीं समझ में आया या जो भी आपको बात नहीं समझ में आई, could you kindly repeat that? Am I correct in understanding that this is this? Okay, तो अगर मुझे समझना है कि हमारी जो भी पूरी बात हुई है, okay, we talked, we had a good conversation and now I'm summarizing it, यानी कि उसे मैं लास्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स में कंक्लूड कर रही हूँ कि पूरी जो बातचीत थी उसका मोटा मोटा अर्थ क्या था, यानी कि उसका मेन मीनिंग क्या था, कौन से पॉइंट्स हमने मेजर डिस्कस किए. Then I can summarize it using this kind of a sentence. Am I correct in understanding that the MBA program which you provide is of 2 years? The classes will be conducted online and the fees is 50,000 for a year. यानी कि मैंने समराइज कर दिया. मैंने क्या क्या समराइज किया कि एक तो प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है, उसकी फीस क्या है और उसका मोड ऑफ लर्निंग क्या है, right? So anything which you are discussing, you can summarize it by asking such kind of a question. And if you had some incorrect information, then the person speaking to you can correct you. Okay. Then could you please verify specific detail to ensure I have it right? Okay. तो क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, खासकर जब हम फोन नंबर लेते हैं. Okay, so many a times when we are required to take a phone number, then we need to verify it. Okay, कि सही तो है ना? So you can say, could you please verify the number? You can just repeat the number to ensure I have it right. To ensure I have it correctly, to ensure I have it accurately,
Let me summarize what you have said so far. Okay, is that correct? Again, a way to summarize and to get a clarification on things and a confirmation as well that the things which I have understood are so and so. Are they correct or not? Okay, so you can use any of these sentences to ask for information in detail, to get a clarification or confirmation on things you have talked during a phone conversation. Okay. Then dealing with technical issues. Now, this is very, very important. Many times when we go in a lift, our voice starts to break up or the call gets disconnected abruptly, यानी कि अचानक से disconnect हो जाता है. Many times we are traveling and we do not have good reception or good network connection. Okay, or many times everything is all right. Okay, we are sitting at a good location, the network is good, but somehow the voice keeps breaking up. यानी कि बात कर रहे होते तो नहीं, आवाज कट जाती है जिसे हम कहते हैं. तो आवाज बार बार कट रही होती है या कुछ एक लाइन में डिस्टरबेंस आता है जिससे कुछ अजीब सी आवाज आती है हमें बात करते वक्त, है ना. So these are all technical issues. Okay. So these are all technical issues that we face during a phone call. And when we are talking to somebody, then we cannot just start speaking or we cannot just repeat again and again. Ki, are you able to listen to me? Am I audible? Am I audible? Okay. It is good to have something more in hand. Okay. Uh, so that you are able to address the technical issue and continue to maintain the flow of your conversation without what we say without an abrupt break. Okay. तो यानी कि कुछ हो भी गया बीच में तो आप आराम से आपका जो कॉन्वर्सेशन का स्मूथ फ्लो था उसे बना कर रख सके, इसीलिए हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैंडी सीख लेते हैं या समझ लेते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हम कह सकते हैं. So you can, sometimes technical issues may arise during a phone conversation, such as connection problems, encountering static or echo. Echo वो हम जो पहाड़ पे खड़े होकर खुद का नाम चिल्लाते हैं और नहीं वापस वो नाम हमें सुनाई देता है. आपने अगर नोटिस किया हो, अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे, ठीक है, पहाड़ों के बीच में, और फिर आप खुद का नाम चिल्लाते हैं जो पुरानी मूवीज में करा जाता था कि वो चिल्लाता था हीरोइन का नाम और वो वापस आता था, है ना. तो दैट इज कॉल्ड एको. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन है एको. एको. ओके. सो एको. और जो स्टैटिक है वो जो नहीं टीवी में ऐसी कभी आवाज सुनी होगी या फोन में भी ऐसे zzz करके जो आवाज आती है. ओके. काइंड ऑफ हनी बी बजिंग. तो दैट इज अ स्टैटिक. और ब्रेकिंग अप ऑफ वॉइस. ओके. अगर आपकी आवाज बार बार कट रही हो तो हम ऐसे नहीं बोलते योर वॉइस गॉट कट. वी से यू आर ब्रेकिंग अप. यू आर ब्रेकिंग अप. ओके. ब्रेकिंग अप यानी कि हम ब्रेकअप नहीं कर रहे थे, आपकी आवाज कट रही थी. ओके. सो यू कैन यूज these kind of sentences. I apologize for the inconvenience, but I am experiencing some technical difficulties on my end. Could we try reconnecting the call? यानी कि जो इनकन्वीनियंस यानी कि जो मुश्किल आ रही है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ. अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना. ओके. इट इज अ गुड वे टू से सॉरी. ओके. अच्छा वे है सॉरी कहने का. आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस. बोथ हैव द सेम मीनिंग. So I apologize for the inconvenience, but I am experiencing some technical difficulties. Or you can say, I'm experiencing some technical issues on my end. Could we try reconnecting the call? यानी कि क्या हम कट करके वापस कॉल करें? अगर हमें ये कहना हो तो उसकी जगह हम ऐसा कहें कि let me cut the call and call you back. I can say, could we try reconnecting the call? जिसका मीनिंग वही होता है
but it sounds more polite, more refined, and it suggests that you have good command on English, which we want. Okay, so if you want your phone conversation to be impactful and the person would like to talk to you again, okay, especially when you are a working professional and you need to build up your professional network, then try to communicate in English on a phone conversation in the most formal, professional, and polite manner as possible. Okay, depending on the people, of course. If you're communicating with your friends, that is all right. If you're communicating with your family members, that is completely a different thing. But we are learning all these aspects. So, from the point of view of uh, going into the workforce, or if you want to advance in your career. Okay. I'm sorry, but there seems to be some static or echo on the line. Would it be possible to adjust the connection or call back? Okay, तो कुछ disturbance आ रहा है, तो हम क्या वापस कॉल कर सकते हैं? I am having trouble hearing you clearly due to poor signal strength. I am having trouble hearing you clearly due to poor signal strength. Is there a better location I can move to for a stronger signal? ओके, तो हम कहते हैं ना सिग्नल नहीं आ रहा, तो सिग्नल नहीं आता है तो हमें लोगों की आवाज ढंग से सुनाई नहीं देती, तो हम ऐसा पूछते हैं कि क्या मैं थोड़ा मूव कर लूं इधर उधर ताकि जहां पे अच्छा सिग्नल आ रहा हो। तो हम क्या करते हैं, जब हम नॉर्मली बात करते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम ऐसा करते हैं कि अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, ऐसा हम करते रहते हैं ना बार बार। So instead of doing that, you can say, let me move to a better location for a stronger signal, और फिर शांति से मूव कर, so are you able to hear me now? ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। Okay, here are some more sentences for dealing with technical issues during a phone call. It seems like there's a network issue causing intermittent disruptions. Now this intermittent word थोड़ा भारी word हो सकता है कुछ लोगों के लिए. Do not worry, you can say it seems like there is a network issue causing in between disruptions. Intermittent यानी कि हर थोड़ी देर में होने वाला, उसे हर थोड़ी थोड़े देर में या थोड़े थोड़े इंटरवल्स में जो टूट रहा है वो। तो इंटरमिटेंट का मीनिंग ये है, या आप ऐसा भी कह सकते हो जो बीच बीच में चल रहा है। यू कैन से इशू कॉजिंग इन बिटवीन डिसरप्शंस। कैन वी एक्सप्लोर एन अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड सच एज ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग? तो क्या आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो? तो हम ऐसे बोले कि आवाज नहीं आ रही है, मेल कर दो या मैसेज कर दो। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, जस्ट मैसेज मी और ईमेल मी। दिस साउंड्स वेरी रूड, है ना? So instead of that, you can say, it seems like there is some network issue. So can we just communicate on email or message? बात तो हमने वही कही, पर अच्छे तरीके से कही, polite manner से कही. Okay. And if you want to advance in your career, then you should develop a skill of good communication, not just in English, but you should communicate in whatever language you are talking in a polite manner, and you should be careful of the words you use and the sentence formation that you are doing. I'm sorry, but my internet connection seems to be unstable. Would it be all right if we continue the conversation over a phone call instead? I'm sorry, but my internet connection seems to be unstable. जब हमारा नेट अच्छा नहीं चल रहा होता, यानी कि हमारा कनेक्शन क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि सही से स्पीड नहीं आ रही। Would it be all right if we continue the conversation over a phone call instead? तो अगर आप इंटरनेट पे बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम अगर आप किसी जूम मीटिंग में थे, ओके, या हो सकता है आप कोई वीडियो कॉल अटेंड कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, एट दैट टाइम the internet connection is causing problems to communicate properly. So that time you can go for this kind of a sentence. I'm currently experiencing a weak Wi-Fi signal. Let me try switching to a different network to improve the call quality. This is very helpful if you are a person who has to attend a lot of video conferences or Zoom meetings. Then
sometimes we have a weak Wi-Fi signal that makes our voice break or our video blur, then you can go for such a sentence to communicate your problem, okay, and while you address the issue. I apologize for any inconvenience caused by the background noise on my end. I will do my best to minimize it. Please let me know if it becomes a distraction. Okay. तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कॉल अटेंड कर रहे हैं एंड वी आर इन अ लोकेशन विद वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, ओके, बहुत ज्यादा आवाजें हो रही है वहां पे। तो जब ऐसी कोई चीज हो रही हो कि बहुत ज्यादा आवाजें है, बैकग्राउंड नॉइज काफी ज्यादा है, तो आप ट्राई करते हो कि आप थोड़ी ऐसी जगह पे चले जाओ कि आवाजें कम आए, but somehow it minimizes it but it not cancels it out, okay? Noise cancellation वैसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही उन्हें आवाज नहीं आए। So you can go for such a sentence that I apologize for any inconvenience caused by the background noise on my end. Uh, I will do my best to minimize it. Please let me know if it becomes a distraction. अगर आप फिर भी बहुत distract हो रहे हैं इस चीज से, तो मुझे बता दो, तो हो सकता है हम ईमेल पे या मैसेज में कम्युनिकेट कर लेंगे। I'm encountering difficulties with my headset. Let me quickly troubleshoot the issue, or would it be more convenient to continue the conversation without using the headset? तो हो सकता है कभी हम headset use कर रहे हो and it is having some kind of an issue. So you can say let me just troubleshoot the issue, यानी कि मुझे issue को address करने दीजिए, issue को solve करने दीजिए। या फिर अगर आप कन्वीनियंट है देन वी कैन कॉन्वर्स विदाउट द हेडसेट, यानी कि बिना हेडसेट के बातचीत कर लेते हैं। और वी कैन से वुड इट बी मोर कन्वीनियंट टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन इन ईमेल, यानी कि चलो ईमेल में बात कर लेते हैं, राइट? देन आस्किंग टू होल्ड। अब जब हम किसी को होल्ड करने कहते हैं, राइट, तो हम ब्लंटली कह देते हैं होल्ड करना, ठीक है, होल्ड करके हम भाग भी जाते हैं, पूरा उन्हें बताते भी नहीं है कि क्यों होल्ड करना है। वी जस्ट से होल्ड करो और हम चले गए, है ना, और बस कॉल पे वापस आके बोलना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, ओके। हो सकता है आपने कोई टेक्निकल इश्यू एड्रेस करने के लिए उन्हें होल्ड पे रखा हो, ओके, या फिर आपने कुछ इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए उन्हें होल्ड पे रखा हो, एंड देन यू जस्ट कम बैक टू द फोन एंड स्टार्ट स्पीकिंग। That is blunt, and sometimes the person who is talking to you on the other end might feel that some things get lost because हो सकता है आपने अचानक से होल्ड पे रख दिया, उन्होंने कॉल कट कर दिया क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था आपने क्यों होल्ड पे रखा, आप क्यों अचानक से चले गए। और हो सकता है आपने अचानक से कुछ बोलना शुरू कर दिया होल्ड से वापस आने के बाद, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि अच्छा दैट पर्सन इज कम बैक, हो सकता है वो भी कहीं चले गए हो, राइट? So it is very important to understand that when you are asking a person to hold the phone, or when you are talking to them again after a hold, then how you should communicate. ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा होगा जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट्स होते हैं, जो हमारी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, राइट? आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या आप कुछ भी काम करते हैं, कई सारी कंपनीज के भी खुद के कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो अपने कस्टमर के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट? तो वो इन सब चीजों का काफी इस्तेमाल करते हैं। बट इफ यू वांट टू एडवांस इन योर करियर देन मेनी अ टाइम्स यू नीड टू टॉक टू पीपल इन दिस मैनर, ओके, इस तरीके से आपको बात करनी होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। अगर आपका जॉब रोल ऐसा है कि जिसमें आपको काफी सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, बातचीत करनी है, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो करना है, you need to attend many conferences, okay, you need to travel places and communicate with people, then you should have a good command on telephonic conversation in English, okay? तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। When you need to put someone on hold during a telephone conversation, it's important to communicate it politely and provide an indication of how long they may need to wait. ओके, यानी कि उन्हें बताना भी पड़ेगा कि उन्हें कब तक वेट करना है।
तो हम सेंटेंसेस दे दे, वी कैन जस्ट से प्लीज होल्ड, यू कैन से sorry, would you mind holding for a minute while I check? One moment please, one moment please, moment मतलब पल, ओके मतलब थोड़ा टाइम दो, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, so that is moment, पल. One moment please. Can I put you on hold for a moment while I check something? Just a quick hold while I look into it, please. Okay? तो while I look into it यानी किसी चीज के अंदर जाके नहीं देखना है, किसी चीज के बारे में अगर आपको देखना है, इंफॉर्मेशन देखनी है, तो उस बारे में देखने के लिए या उस मामले को समझने के लिए आप कह सकते हैं जस्ट अ क्विक होल्ड व्हाइल आई लुक इनटू द मैटर और व्हाइल लुक इनटू इट प्लीज. ओके, आई नीड टू चेक, आई नीड टू चेक विद अ कॉलीग, माइंड होल्डिंग फॉर अ मोमेंट. मुझे अपने कलीग के साथ बात करनी होगी, तो प्लीज आप थोड़ा होल्ड कीजिए. सॉरी आई हैव समथिंग अर्जेंट टू अटेंड, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड ब्रीफली? ओके, तो मुझे कुछ अर्जेंट अटेंड करने जाना है, हो सकता है अचानक से कुछ काम आ गया एंड यू नीड टू टॉक टू सम अदर पर्सन, देन यू कैन जस्ट से सॉरी आई हैव समथिंग अर्जेंट टू अटेंड टू, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड ब्रीफली? ओके, और यू कैन से कैन आई होल्ड यू ऑन होल्ड फॉर अ मोमेंट और फॉर अ फ्यू मिनट्स. आई नीड टू गैदर मोर information, कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट? यानी मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन और इकट्ठा करने दीजिए, हो सकता है वो आपसे पूछ रहे हो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ या नहीं, अब आपको पता है आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और चाहिए उनसे बात करने के लिए. So at that time you can say I need to gather more information, can you hold on for a moment? Apologies for the inconvenience, let me put you on hold briefly to verify some details. Okay, hold on for a moment while I gather the necessary information please. Okay, तो जो जरूरत की इंफॉर्मेशन है वो मुझे गैदर करने दीजिए. गैदर करना यानी कि इकट्ठा करना. द वर्ड गैदर मीन्स टू accumulate यानी कि इकट्ठा करना. ओके, देन होल्ड पर रख दिया, अब होल्ड से हटा दिया यानी कि अब होल्ड के बाद आपको बात करनी है. सो ऑलवेज से थैंक यू फॉर होल्डिंग. ओके, इट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर यू हैव पुट समवन ऑन होल्ड फॉर अ फ्यू minutes or even longer than that. So thank you for holding, thank you for your patience. इट इज प्रोनाउंस्ड एज पेशेंस. पेशेंस, ओके, यानी कि धीरज, सहजता जो हमारी होती है, दैट इज कॉल्ड पेशेंस. थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर होल्डिंग, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस. आई अपोलोजाइज फॉर द वेट, थैंक यू फॉर होल्डिंग. सॉरी फॉर द ब्रीफ इंटरप्शन, थैंक यू फॉर होल्डिंग. आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, थैंक यू फॉर होल्डिंग. थैंक यू फॉर वेटिंग, आई एम बैक. ओके, ये फ्रेजेस इंडिकेट करते हैं कि हाँ चलो होल्ड पे थे, अब होल्ड से वापस आ गए हैं. ओके, नाउ वी आर बैक टू द पवेलियन, बैक टू द कॉन्वर्सेशन. ओके, तो ऐसा इंडिकेट करने के लिए आपको ऐसे सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज करने चाहिए. अब कुछ एडिशनल सिचुएशंस देख लेते हैं. हमने अभी तक मेजर जो हम बातें करते हैं या जो हमारे साथ इश्यूज क्रिएट होते हैं या जिन बारे में हमें पता होना चाहिए while having a conversation on phone, उसमें हमने देखा कि हमें ग्रीटिंग पर ध्यान देना चाहिए यानी कि यू कैन स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग. फिर हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है द कॉलर एंड द रिसीवर. Then comes if we need to address some technical issue and regarding or we are facing some technical issue while having the conversation. At that time, how can we communicate the same to the person we are talking to? Okay. How can we ask for clarification and confirmation, and how to put someone on hold and how to answer the call after putting someone on hold. Okay. Now we are going to see some other situations. That is, first is taking a message. Okay, taking a message is not just a message in written, but it is a verbal message as well. यानी कि हो सकता है that you forgot your phone at your friend's place. Okay,
अब आपके दोस्त के घर पे आपका फोन भूल गए, and now your phone kept on ringing, so your friend received the call and said that you forgot your phone there, and so can he or she take the message for you? यानी कि जो सामने वाला कुछ बात कहना चाहता है, वो मैसेज लेके आपको पास ऑन कर सकता है, ऐसा। तो ऐसी जब हम बात करते हैं, दैट इज टेकिंग अ मैसेज। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी वर्बल, बोथ। यानी कि लिखा हुआ भी हो सकता है। अगर हम किसी को वो हम खुद भी कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें वो मैसेज कन्वे करना है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा नोट बनाकर, जहां पे सामने वाला इंसान देखे, उससे द पर्सन इज एबल टू नोटिस दैट नोट, वहां पे रखेंगे और छोड़ के चले जाएंगे। राइट, सो दैट इज हाउ यू कैन पास ऑन अ मैसेज। So taking a message, I'm sorry, but the person you are trying to reach is currently unavailable. May I take a message for them? Okay, message for them, or may I take a message for him or her? I'll make sure to pass along the message. Could you please provide your name and contact information? Okay, यानी कि मैं उन्हें वो मैसेज दे दूंगा या दे दूंगी, तो आप आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और नाम बता दीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि किसकी तरफ से ये मैसेज था। When we are transferring a call, this is more prevalent in the workplace. Workplace में हमें call transferring करनी पड़ती है। I'll connect you to the appropriate department or person. Please stay on the line. Okay. Let me transfer you to someone who can assist you further with that matter. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ये लैंडलाइन पे जो कॉल ट्रांसफर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। It can be a situation where you have a team of 10 or 15 people and you sit in an office. You sit in an office and someone called for you. Someone called on your phone and they are asking about some issue, and you are not the appropriate person for that task. So you say that let me transfer you to someone who can assist you further with that matter. ओके यानी कि जो आपका इशू है उसके रिगार्डिंग मैं आपको किसी से बात करवा देता हूँ। तो ऐसा आप जब कहना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस सेंटेंस। देन अपोलोजाइजिंग फॉर अ मिस्टेक, अगर कोई गलती हो जाए, ओके, I apologize for the confusion or error. Let me rectify that for you right away. I apologize for the confusion or error. Let me rectify that for you right away. Rectify. Meaning of rectify is to correct. Okay, let me correct that for you right away. Let me rectify that for you right away. So rectify means to correct. Okay. I am sorry for any inconvenience caused. I will do my best to resolve this issue promptly. I am sorry for any inconvenience caused. I will do my best to resolve this issue promptly. यानी कि जो भी आपको परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को जल्दी से रिजॉल्व करा जाए, यानी कि सॉल्व कर दिया जाए, उसका सॉल्यूशन लेकर आए promptly. Promptly. Okay. Promptly meaning at the earliest, जल्द से जल्द. Okay. Promptly meaning at the earliest, जल्द से जल्द जब हम कह रहे हैं, that is when we use promptly. Then finally, ending a call. हमने समझ लिया होल्ड पर कैसे रखते हैं, क्लैरिफिकेशन कैसे रखते हैं, किसी को रिपीट करने के लिए कैसे कह सकते हैं, सब कुछ हो गया। अब पूरी बातचीत होने के बाद we need to end the call. Okay, so while ending the call you can say thank you for calling, have a great day. If there's nothing else, I wish you a pleasant day, goodbye. Or you can say if there's nothing else, goodbye. Okay, then you can just say goodbye, bye, have a great day. Okay, you can also say it was nice talking to you. Thank you for your time. Okay, you can say it was nice talking to you, or thank you for your time. Okay, ऐसा कहकर आप आपके conversation को end कर सकते हैं. These are some sample conversation which will make you understand how this actually works. तो मैंने यहाँ पर कुछ simple चीजों का example लिया है. First is ordering food delivery.
Now, thank you to the technical advancements, we have Zomato and Swiggy. Okay, तो हम वहीं से ऑर्डर कर लेते, ज्यादा हमें बातचीत करनी नहीं पड़ती. बट इन केस कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमें कॉल करके वहीं से ऑर्डर करवाना हो, तब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो वी हैव टू पीपल, दैट इज पर्सन ए एंड पर्सन बी. ओके, तो पर्सन ए और पर्सन बी है जिनके बीच में ये बातचीत हो रही है. हेलो एबीसी रेस्टोरेंट, हाउ मे आई असिस्ट यू? Hi, I would like to place an order for home delivery, please. Sure, can I have your address, please? Yes, it's flat 502 or 502, Greenview Apartments, MG Road, Mumbai. Thank you. What would you like to order? I would like a veg biryani, butter chicken and garlic naan. Anything else? Yes, please add a mango lassi to the order. Great. Your order will be delivered in approximately 45 minutes. Is that okay? That works. Thank you. You're welcome. Enjoy your meal. Okay. So this was a very simple conversation regarding ordering food delivery. So जैसे मैंने कहा कि आप ग्रीटिंग से शुरुआत करते हैं. ओके, तो उन्होंने ग्रीटिंग से शुरुआत करी. अब जो पर्सन ऑर्डर ले रहा है उन्होंने नाम नहीं पूछा, पूछ भी सकते हैं वो, जस्ट टू आइडेंटिफाई द कॉलर, राइट, कि कैन आई हैव योर नेम एंड एड्रेस, वो भी पूछ सकते हैं कि किससे ऑर्डर डिलीवर होने वाला है. देन दे वेंट टू द कंटेंट, यानी कि किस बारे में कॉल किया गया है, तो फूड ऑर्डर करने के लिए, तो डेफिनेटली क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे उस बारे में बात की गई. एंड देन फाइनली इट वाज व्हाट वी से द एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि कब तक खाना डिलीवर हो जाएगा या जिस रिगार्डिंग उन्होंने कॉल किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई, और फिर कॉल को एंड कर दिया गया. राइट, दिस इज द सेकंड कॉन्वर्सेशन, इंक्वायरिंग अबाउट बस टाइमिंग्स. ओके, तो अगर हमें बस की टाइमिंग के बारे में जानना है, देन यू कैन गो फॉर सच अ कॉन्वर्सेशन, और इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे बात की जाती है ना. हेलो सिटी बस सर्विस, हाउ कैन आई असिस्ट यू, और हाउ कैन आई हेल्प यू? Hi, I wanted to know the timings for the bus from MG Road to Indiranagar. Sure, the buses run approximately every 15 minutes. The next bus will depart from MG Road at 10:30 a.m. Now, the person A was very fast, that he had all the information on hand, but sometimes the person might not. Then they can ask you to hold. So they can say after this that, hi, I wanted to know the timings for the bus from MG Road to Indiranagar. Sure, please hold on for a moment while I check the necessary information. Right. And then they can come up with this answer, that is your information. Thank you. And how long is the journey? यानी कि कितनी लंबी है. Okay, कितनी लंबी है समय के हिसाब से, कि कितना टाइम लगता है जाने में, ऐसा अगर आपको पूछना हो तो यू कैन से हाउ लॉन्ग इज द जर्नी. अगर आपको किसी दोस्त को भी पूछना हो, हम जहाँ जा रहे हैं आज, कैफे में जाने का प्लान बना, तो आप पूछ सकते हो हाउ लॉन्ग इज द जर्नी, यानी कि कितनी देर तक लेकर जाओगे, भी कितनी देर लगेगी पहुंचने में. ओके, और हाउ फार इज इट, कितना दूर है या कितनी देर लगेगी. It usually takes around 30 minutes depending on the traffic. Person B, all right, that's helpful. Thank you. You're welcome. Have a pleasant journey. Right? And this is your final conversation. It is booking a salon appointment. Okay, it is pronounced as salon. Usually N is silent, so it is pronounced as salon. Okay, booking a salon appointment. So a salon appointment, or a salon, or some people say saloon. Okay, so it is salon. आप जिस pronunciation में comfortable हो, do not worry about it. In India, it is more about understanding what you are saying. Okay, any non-native English speaking country, or people who are non-native to the English language, the pronunciation is different. Okay, pronunciation differ करता है region to region, people to people.
उनकी खुद की मदर टंग जो है, मदर लैंग्वेज वो कैसी है, मदर टंग कैसी है, सॉरी मदर लैंग्वेज नहीं, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, इट इज मदर टंग। उनकी मातृभाषा कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो pronunciation, it is fine. Sometimes it might not be as such to the people who are native speakers of the language, so it is all right. जैसे अगर कुछ foreigners हिंदी बोलेंगे so they sound funny, right? इसीलिए so it is all right. You can say whatever you like. I'm telling you the pronunciation just for your information, and if you would like to learn that. Booking a salon appointment. Good morning, beauty studio. How may I help you? Hi, I would like to book an appointment for a haircut and hair color. Sure, when would you like to come in? I'm available this Thursday. I'm available this Saturday at 3 p.m. Is that slot available? Let me check. Yes, we have an opening at 3 p.m. Can I have your name, please? Yes, it's Priya Sharma. All right, Priya. Your appointment is booked for Saturday at 3 p.m. We look forward to seeing you then. Thank you so much. You're welcome. You're welcome, Priya. See you soon. यहाँ पर जब उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी, she again repeated all the details. All right, Priya, your appointment is booked for Saturday at 3 p.m. We look forward to seeing you then. This is nothing but a way of getting clarity and confirmation. ठीक है, उसने कंफर्म करा जो पर्सन थी जिन्होंने बुकिंग ली है. So the person A confirmed the booking of person B by repeating the details just to get a confirmation. अगर वो कुछ गलत रिपीट करती, अगर वो कहती Saturday at 2 p.m. so the person B, that is Priya, would have corrected her, right? So this is a way of getting confirmation and clarity just to repeat what the person has told you and what you have understood. Okay. So that is the end of today's session related to phone conversation, mastering your phone conversations in English. I hope from now onwards, when you are talking to somebody, you will try to converse in English with them and try to use the phrases and words which we have learned today. Again and again, I keep on saying, spoken English के लिए practice बहुत जरूरी है. तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, आपके दोस्तों से बात कीजिए, जिस भी इंसान को इंग्लिश में बात करने में इंटरेस्ट है या जिसकी इंग्लिश अच्छी है, यू कैन ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम. और इवन व्हेन यू ट्राई टू बुक एन अपॉइंटमेंट, ओके, गेट अ रिजर्वेशन एट अ रेस्टोरेंट, ऐसी कोई भी जगह जहां आपको मौका मिलता है इंग्लिश में बात करने का, बेझिझक होकर बात कीजिए. Okay, the more you practice, the more you learn, the more you improve. Thank you so much for watching. If you like the session, then press the thumbs up, give it a like, okay, and press the bell icon for getting continuous notifications. Thank you so much. See you tomorrow.